हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा मंडल सर। और आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस मैग्नेटिज्म। एंड मैं पूरी ट्राई करूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म के जितनी भी लिस्ट ऑफ फॉर्मूले हैं सबको मैं डिफरेंस मेथड के थ्रू एक्सप्लेन कर सकूं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी में क्या चल रहा है एंड मैग्नेटिज्म में क्या चल रहा है, दोनों डिफरेंस मेथड से हम पूरे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले को ट्राई करेंगे समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बात करते हैं चार्ज रेस्ट पे एंड मैग्नेटिज्म में हम बात करते हैं चार्ज मोशन में। सो फर्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट डिफरेंस आएगा आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे एंड मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो ये अपीयर होता है अराउंड द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो सिंपल हम फर्स्ट लिखेंगे, इट अपीयर्स अराउंड चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल का क्या मतलब है? ईदर चार्ज विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड इसका फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट अपीयर्स अराउंड मूविंग चार्ज पार्टिकल। मूविंग चार्ज पार्टिकल और क्या हो सकता है? अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सेकेंड डिफरेंस हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिप्रेजेंट होता है E एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जो रिप्रेजेंट होता है इट्स B वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज विच इज एट रेस्ट कंडीशन। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे होगा फोर्स इन विच चार्ज इन मोशन, दैट मीन्स चार्ज इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी। अगर इस फोर्स के हम इक्वेशन को, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे भी आप वेक्टर लगा सकते हो। यहाँ पे वेक्टर चार्ज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी तो वेक्टर नहीं लगेगा एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस इक्वेशन को अगर अरेंज करें तो आपका फोर्स का इक्वेशन आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन आ जाएगा चार्ज टाइम वेलोसिटी इनटू बी। अगर वेक्टर की बात करें तो फोर्स वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। यहाँ पे अगर हम वेक्टर लगाएं तो V भी वेक्टर, B भी वेक्टर। बट प्रॉब्लम ये है कि अब ये क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा या डॉट प्रोडक्ट लगेगा। देखिए ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या दे रहा है? एज अ रिजल्ट में वेक्टर दे रहा है। तो वेक्टर मीन्स आपको वेक्टर प्रोडक्ट लगाना है जो कि आपका क्रॉस की साइन लगेगा। तो योर फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दिस फोर्स विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा Q इन ब्रैकेट V क्रॉस B, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा Q टाइम्स E। अगर हम ये दोनों फोर्स को ऐड कर दें, नेट फोर्स, टोटल नेट फोर्स, तो आपका हो जाएगा FE प्लस FM, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। एंड इस नेट फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं। तो लॉरेंज फोर्स का जो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा Q, देखिए दोनों में Q क्या है? कॉमन है, एंड इन ब्रैकेट आप यहाँ पे लिख सकते हो E प्लस V क्रॉस B। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। तो सेकेंड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन देखा, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन देखा, एंड देन इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड हियर इट इज मैग्नेटिक फोर्स। साथ में हम यूनिट की भी बातें करते जाते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम. सो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम. एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, चार्ज का कूलम, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. तो रीअरेंज करने के बाद हमें पता चलेगा न्यूटन सेकेंड अपॉन कूलम मीटर और टेस्ला. ओके, दोनों भी ऐसा यूनिट है तो मोस्टली टेस्ला इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट. तो आप टेस्ला जा सकते हो, टेस्ला के थ्रू आप ज्यादा यूज कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट. बट डायमेंशन निकालने के लिए आई थिंक आपको ये यूनिट की जरूरत पड़ेगी. नाउ थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का हमने फॉर्मूला देखा विथ फोर्स इक्वेशन. नाउ थर्ड की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल. थर्ड डिफरेंस हम डाइपोल कर लेते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिज्म में हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक डाइपोल. नाउ अब ये डाइपोल दिखता क्या है एंड व्हाट डज इट मीन. डाई मीन्स दो, पोल मीन्स पोलैरिटी. तो अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट करेंगे माइनस q, यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट होगा प्लस q. इस दोनों के बीच का डिस्टेंस इट्स 2a. Why 2a? बिकॉज ये इक्वेटर से लेफ्ट जाएंगे तो आपका डिस्टेंस होता है a एंड इस इक्वेटर से राइट में जाएंगे तो डिस्टेंस होगा a. ओके, सो a और a will be your 2a. So this is the structure of electric dipole. And if we talk about magnetic dipole, so let's draw a simple magnet, bar magnet. A bar magnet has two pole, north pole, south pole. North pole has a strength, consider as pole strength, which is represented as M. South pole has again a pole strength represented as minus M. So north has a magnetic strength represented as positive M and south the magnetic strength is represented as minus M. And they are separated by some distance and this distance is called as 2L and this 2L is called as magnetic length. तो अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो ये इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा. Why 2L? बिकॉज इसके इक्वेटर से लेफ्ट वाला डिस्टेंस इज कॉल्ड एज L एंड इक्वेटर से राइट हैंड साइड के डिस्टेंस इज कंसिडर एज L. सो L plus L will be 2L which is the magnetic length of the given magnet. सो ये आपका स्ट्रक्चर की बात हो गई. इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल दिखता कैसा है. नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. वो वर्ड है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. एंड अगर हम मैग्नेटिक में बात करें तो यहां पे हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is represented as small p bar since it is a vector quantity. Magnetic dipole moment is represented as capital N bar, again it's a vector quantity. And if we talk about the formula, so p is equal to either charge like आप q और माइनस q और प्लस q. अगर आप पॉजिटिव की बात करोगे तो प्लस q, नेगेटिव की बात करोगे तो माइनस q. ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस. सो तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2aq. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, 2aq. एंड इफ वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, so magnetic dipole moment will be again either magnetic strength into distance between what? Two magnetic strength.
which is 2L. तो आपका m का फॉर्मूला हो जाएगा 2Lm. And if we talk about the SI unit, so charge is measured in coulomb and distance is measured in meter. So this is the unit of electric dipole moment. And if we talk about magnetic dipole moment unit, so m is measured in ampere meter and distance is measured in meter. So your final unit will be ampere into meter square. So electric dipole moment, the formula is 2aq. Magnetic dipole moment, the formula is 2Lm. यूनिट की बात करें कूलम इंटू मीटर, यहाँ पे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर. नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने मैग्नेट का देखा, बट अगर एक सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो उससे भी हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होती है. तो उसका फॉर्मूला कैसा होगा, लेट्स फाइंड आउट. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ सर्कुलर कॉइल. This coil has some radius r and current is flowing in the coil. Let us consider the number of turns is only 1. So the current produces a magnetic dipole moment, and that magnetic dipole moment is nothing but the current times area of the coil. Okay, so area can be calculated by pi r square, since pi r square is the area of the circle. So again, if we talk about the SI unit, so current is measured in ampere and area is measured in meter square. See, ये formula का unit and इसका unit, they are matching with each other. That means magnetic dipole moment हम दो तरीके से, दो फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. पहला एक मैग्नेट के थ्रू which is 2Lm, दूसरा एक रिवॉल्विंग करंट के थ्रू विच इज करंट इनटू एरिया. दिस इज फॉर वन नंबर ऑफ टर्न. अगर आपका नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो आपका m का फॉर्मूला हो जाएगा NIA, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट फ्लोइंग इन द लूप, A इज द एरिया ऑफ द लूप, and unit will be ampere into meter square. Now most important thing is what will be the direction of electric dipole moment or magnetic dipole moment, since they are a vector quantity. So electric dipole moment, it is always directed from negative charge to positive charge. Always the direction of electric dipole moment is always from negative charge to positive charge, negative to positive. Same with magnetic dipole moment, it is always directed from negative to the positive. Negative means south pole to the north pole, south to north. So direction of magnetic dipole moment is always from south pole to north pole. So this was our third difference in terms of dipole. Now we'll talk about torque. Torque in electrostatics, torque in magnetism. So our fourth difference is torque. Now whenever this dipole is placed in the uniform magnetic field, it experiences a torque. Same with whenever we placed a magnetic dipole moment in the magnetic field, uniform magnetic field, again it experiences a torque, and that torque will be calculated by a simple formula. Tau is equal to PE, P cross E. Torque is equal to P cross E, where P is the electric dipole moment, E is the uniform electric field, and tau is representing torque. This is in vector form. If you want to write in scalar form, so tau is equal to PE sine theta, where is theta is the angle between P and E. Okay. Now, if we talk about magnetic torque, so tau will be
P will be replaced by capital M and electric field will be replaced by magnetic field. So this is the formula of magnetic torque, and if we remove the cross sign, so your answer will be mv sine theta. Now I'll tell you the sine theta value also. If it is sine 0, your answer will be 0. Sine 180, again 0. And sine 90 is 1. That means torque will be maximum when theta is 90 degree in both the cases, whether it is a electrostatic case or a magnetism case. Now fifth difference is potential energy. Potential energy in terms of electrostatics or in terms of magnetostatics. So potential energy is represented as U, and it is a scalar quantity, and its formula is P dot E bar. Why dot product? Because dot product always gives scalar answer, and potential energy is a scalar answer. But there is a negative sign, and if we remove the dot product, your answer will be minus PE cos theta. Same with magnetism. Potential energy will be equal to P will be replaced by capital M, dot will remain as it is, electric field will be replaced by magnetic field with negative sign. And if we remove the dot product, your answer will be minus MB cos theta. Hope it is clear. Now sixth difference is free space constant. Free space constant. In electrostatics, we usually used epsilon naught, and in magnetism we use mu naught. Okay, epsilon naught ka value is 8.85 into 10 raised to minus 12 coulomb square upon Newton meter square, and if we talk about mu naught, its value is 4 pi into 10 raised to minus 7 Tesla meter upon ampere. Fine. This is the free space constant. Epsilon naught is called as permittivity of the free space, and mu naught is called as permeability. Now seventh difference is the force difference. What will be the Coulomb's law for electrostatics and Coulomb's law for magnetism? Now seventh difference will be based on Coulomb's law. As per Coulomb's law of electrostatic, the force is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them. So the final equation will be F is equal to K Q1 Q2 upon R square. This is for electrostatic, and if we write for magnetism, force will be K will remain as it is, Q1 will be replaced by M1 M2 magnetic strength upon R square. Here the K ka value in electrostatic is 1 upon 4 pi epsilon naught, which is also equal to 9 into 10 raised to 9. If you solve 1 upon 4 pi epsilon naught, you will get a constant value 9 into 10 raised to 9. But in magnetism, if we replace K value is mu naught upon 4 pi, which is equal to 10 raised to minus 7. So just remember these two constant value for the numerical purpose. Now next difference, eighth difference, is we are going to write the electric field equation for a dipole at
two places. The first places we will consider as axis, second place we will consider as equator. So let's write down the equation. Electric dipole in terms of electric dipole, we will calculate electric field along the equator, and second equation, electric field along the axis. Okay, so equations are very simple. The first equation will be for equator, it's minus Kp upon Rq. What is K? K is nothing but constant. So you can substitute 1 upon 4 pi epsilon naught P upon Rq. And for axis, minus 2 Kp upon Rq. So here you can write minus 2, K ka value will be 1 upon 4 pi epsilon naught into Rq. Same you can write it down for magnetism. Just E will be replaced by B, P will be replaced by capital M. Remaining term will be remain same. So B will be minus K, P will be replaced by capital M, and here it is Rq. So minus K, K ka value is mu naught upon 4 pi, mu naught upon 4 pi, capital M upon Rq. This is the equation of magnetic field for a equator, and here magnetic field for a axis. So your answer will be minus 2K M upon Rq. Just substitute the value of K, mu naught upon 4 pi 2 M upon Rq. So this is the equation of electric field along the equator and axis. Same here, magnetic field along the equator and axis. If we divide equator upon axis, so we will get a simple relation that magnetic field along the axis is 2 times of magnetic field along the equator. This is a very important relation you can use in the numerical. Okay, sometimes in numerical you will come to know that you have to find axis as well as equator separately, but I am suggesting you, if you are able to find out the axis equation and axis value, so don't substitute again to get the equator value. What you have to do, just simply divide by 2 to get axis, to get equator, and if you multiply by 2 you will get the axis equation. Do not calculate 2 times, okay? It will save your time if you know the relation that B axis is always equal to 2 times of B equator. Okay, no need to calculate separately for equator and axis. Now this was our 8th relation. Let's find out the relation number 9 in electrostatic. The 9th relation is Gauss law. Let's find out Gauss law. Gauss law in electrostatics and Gauss law in magnetism. If we talk about Gauss law, so Gauss law is electric flux is equal to integration of electric field over a closed surface will be equal to total charge enclosed by the surface upon epsilon naught. This epsilon naught is representing permittivity of the vacuum, and if you are considering medium, to just remove naught sign, so your answer will be Q enclosed upon epsilon for the medium. Okay, so electric field is equal to
E dot ds. ds is the area. We are integrating with respect to area. Okay, so electric field over a closed surface will be equal to charge enclosed upon epsilon naught. What does it mean, charge enclosed? That means, for example, if you have a irregular shape of body, inside the body there are two charges. Let us consider minus 2q or plus 2q or minus q, and there is one more charges plus 3q. So charge enclosed means you are going to talk about only the charge which is present inside the body, that is 2q or minus q. You cannot take this charges since it is outside of the body. So your total charge will be plus 2q minus q is nothing but q. So total net charge of the system will be q only. And there is an important term related to Gauss law, that Gauss law is true for any closed surface, no matter the shape and size of the object. Okay, whether the size is regular, whether the size is irregular, you're just going to consider the total net charge enclosed by the system. Okay. Now, if we talk about Gauss law in magnetostatics or magnetism, so the magnetic flux is equal to integration over a closed loop magnetic field dot surface integral will be equal to 0, always 0. Now, why it is 0? Let me tell you the reason. First of all, that I'll explain the equation, that net magnetic flux, this is the total net magnetic flux over a closed surface, will be always 0. Why? Because if we talk about the magnet, a bar magnet, this is North Pole and South Pole. In North and South Pole, the total number of magnetic lines which is coming out from the North Pole is always equal to total number of magnetic lines going or sinking at the South Pole. That means, for example, if 10 number of magnetic lines of force are emerging from North Pole, so all the 10 lines are terminating at South Pole. Okay, that's the reason here the total flux, magnetic flux through any closed surface will be always 0. That's the basic difference between Gauss law in electrostatics and Gauss law in magnetism. Now, next 10th one, the 10th difference. 10th difference is electric field inside the charged conductor. Inside the charged conductor is always 0. And here magnetic field inside the bar magnet, inside bar magnet never equal to 0. It cannot be equal to 0. Why? Because outside of the bar magnet, the magnetic lines of force are from North Pole to South Pole, but inside the bar magnet, if we check, the magnetic lines of force from South to North Pole. Okay, there is a closed continuous loop. There is no breakage of magnetic lines of force in between. Okay, so it is a closed continuous loop. It is originating from North Pole, terminating on South Pole, again coming back to the North Pole. Okay, so that was the basic difference between electrostatics and magnetism. Hope you have understood, and I have tried कि मैक्सिमम फॉर्मूला हम कवर अप कर चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म में. सो जस्ट आप एक बार गो थ्रू कीजिए पूरे फॉर्मूले को. कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट एनी प्रूफ, एनी फॉर्मूला का प्रूफ, you can write it down. So I'll try next video, I'll write down the proof also. I'll explain the proof as well. Okay, and if you want the numerical based on any formula, you can just write it down. So next time
आई विल मेक श्योर कि उस फॉर्मूले से रिलेटेड एक या दो न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करके हम एक्सप्लेन कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।